Warm greetings, everyone. I am Shubham Sharma, the Finance Director of Meloquent the Marketing Society, Sri Aurobindo College, and your host for today. As we begin our journey of learning from the brilliant minds via our talk show, Melody Demystify, Future of Accounting and Auditing with special focus on automation. Today, we have someone with us who is doing something that he is really passionate about. We have with us CA Pranav Pratik Tulsian, who is a highly motivated individual and a passionate professional. He believes in the idea of a day spent without learning something new is a day wasted. He is currently serving as a senior accounts officer at Indian Oil Corporation Limited for the past 2 years. Prior to IOCL, he has also been served as an assistant in Ernest& Young, also known as EY. But this is not something that he is known for. He was able to achieve a whooping All India Rank 1 in CPT and CA intermediate exams, completed his articleship from a reputed Big Four firm, and achieved All India Rank 5 in CA finals. Talking about his work, he has a YouTube channel named Efficient Corporates where he talks about automation in the field of finance and how Python can be used in the process of automation. He also creates awareness about the same through Quora and Facebook as well. He also has another YouTube channel that talks about a variety of topics ranging from career guidance to myths regarding CA exams and much more. He thrives on challenging projects to develop strategies in his work. He believes in the concept of always learning. We have with us Anushka Jain as the moderator for this episode. So, without any further delay, let's start with our sixth episode of Melody Demystify. Over to you, Anushka. Thank you so much, Shubham, for the lovely introduction. And now, welcome, sir. As you know, I am Anushka Jain and I will be the moderator for today. So, let us begin. So, my Okay. first question for you is CA is such a difficult course. So, what was your reason to aim for it? Okay. So thank you, Subham, first of all, and thanks, Anushka. So coming to the question, CA is being a difficult course. Definitely, CA is known for being a tough course. And my choice for CA was motivated by me being from a business background. I've seen my father being in business. So that is why I was always motivated कि करना तो business ही है. So that is why, and when you go into commerce, and that was why, despite having the great marks in class 10, I still chose commerce as a field and not science because I was inclined towards doing business. And once you get into commerce, there are, I think, there are moreover two opportunities. Either you can go for an MBA or you can go for a CA. And at that point of time, I think I was inclined towards CA because ज्यादा आइडिया नहीं था सीए के बारे में, बट इतना पता था कि द सब्जेक्ट्स विच आर टॉट दे कवर ईच एंड एवरीथिंग. दे कवर अकाउंटिंग, दे कवर टैक्सेशन, दे कवर लाइक फाइनेंस का जो भी होता है, ऑल द टूल्स विच यू नीड, ऑल थिंग्स आर कवर्ड. सो आई थिंक दैट वाज व्हाई आई चोज सीए. एंड ये डिफिकल्ट है इजी है वो उतना सोचा ही नहीं था, तो लगा था कि चलो सीए करना है तो करेक्ट, मतलब एनी कोर्स वी हैव टू डू, डिफिकल्ट हो इजी हो, दैट वाज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर. मुझे तो 10th में और 9th में साइंस देख के समझ आ गया था कि मुझे कॉमर्स लेनी है. अच्छा, ओके. Okay, so next question is if we see CA has a variety of fields like accounting, auditing, valuation, etc. Which one would you prefer the most? Okay. What I believe is that a complete CA cannot like attach himself to one particular field, है ना? So same case. I think in my case, it's not that there is one thing which I like the most. I like accounting. Accounting is something which is the basic to us, so that is one thing which I definitely like. And apart from that, one thing is that the auditing thing which we do is the auditing. Maybe the regular auditing I don't like that watching वगैरह चीज I don't prefer because कोई भी compliance part I'm not very comfortable doing. कि compliance में मेरे को उतना मजा नहीं आता. The thing which I like in auditing is the analysis part. When you analyze कि चलो ये how the financials have changed over time. Last year इतना था, इस बार इतना है. So how the company is performing. So this analysis thing is which I like the most in among many fields of CE. And apart from that, the valuations, due diligence, taxes, and accounting, all these are that all these things are like accessories for a CM. तो मेरे को personally तो सबसे अच्छा audit में analysis लगता है. And apart from that, I think that company law का knowledge हो, tax का knowledge हो, finance का knowledge हो, stock market का थोड़ा बहुत सब कुछ पता ही होना चाहिए.
So in that way, I won't give a specific order, but first is the analysis part. When you look at the financials, how you are able to read key, how the company is performing. That thing is the I feel that CA has that edge over any other profession. He can read the financials at best. And apart from that, having the knowledge of all tax and in IDT costing, that is मतलब वो सब तो है. So there's no one particular field which I would say. I think my favorite is also accounting only. Okay, so during articleship, how much did you feel was the involvement of technology in your work? ओके ड्यूरिंग आर्टिकलशिप नाउ देखो आर्टिकलशिप में जो होते हैं दे आर मोर ओवर दे आर स्टूडेंट्स होंगे ना तो उतना पता नहीं होता ज्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में उनको बस थोड़ा सा अकाउंटिंग का वो पढ़ के आए होते हैं एंड सिंस आईपीसी में लॉ वगैरह होता है एंड देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा बहुत तो वो सब कुछ मतलब ऊपर से जा रहा होता है प्रैक्टिकली डोंट नो एनीथिंग कि प्रैक्टिकली कैसे होता है वो काम we just know normal accounting entries. So articleship में technology से उतना means the only thing which we used was Excel. एक level का Excel we used to use in Big Four. And one thing which I got exposure in the second year of articleship was the JE testing. And that was my first interaction with I would say data analytics because there what we used to do we used to हम compare करते थे the entire set of journal entries which a client has passed in last year and current year. And general entries they were around like 24 lakhs or 25 lakhs of entries in each year. So we used to compare the both the year entries and then we used to draw some insights कि which some entries which are risk based audit इसको बोलते हैं कुछ entries देख के लगता है कि हाँ भाई ये इतना क्यों बढ़ रहा और in particular sales when we see day wise sales. So what we saw was that कि month के end में sale हमेशा बढ़ जाता है. So that was where we saw कि month के end में क्यों sale बढ़ रहा है और the first second third पूरे week में ठीक है month के end में 2-3 दिन में sale काफी बढ़ जाएगा. So these were some analysis which I think this was the interaction with the technology which I did in my articleship. And apart from that, I think there's no much. Even I could see even in Big Four, they use technology like Excel. वगैरह use करते they have their own software, their own website, their own documentation way of documenting. All these things they have. And ये जो data analytics वाला part था, I think this was very new to me. A use of technology, I would say. Okay, so now moving to the topic. From articleship to job, how much change have you seen in the automation of auditing and accounting? ओके ऑटोमेशन आई थिंक फ्रॉम आर्टिकलशिप में जैसे मैंने बताया कि ज्यादा मतलब उतना आइडिया नहीं होता है हम ऑडिट में दे आर लाइक व्हेन यू गो टू अ प्रैक्टिकल ऑडिट तो क्या होता है कि लास्ट ईयर के वर्क पेपर्स में वी हैव टू लाइक से कि तो इस बार क्या हुआ एंड अगर पिछले बार इतना एक्सपेंस है इस बार इतना एक्सपेंस है तो क्यों बढ़ गया एंड वी एनालाइज एक्सपेंसेस तो दैट वाज आर्टिकलशिप बीइंग एन ऑडिटर साइड आप काफी हाई लेवल से देखते हो फाइनेंशियल्स को कि ना हाई लेवल से कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है एंड ट्राई टू एनालाइज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. Now, when you are in a job, that is where you are making those financials. The financials बन रहे, you are passing the entries. As an auditor, you never pass entry. As an auditor, जो entry pass हो गई, you analyze that. But in a job, you have to pass entries. You have to analyze कि कौन सा entry amount कितना होगा. So all that you calculate. So what I have seen that when I came in job, I could see there were more of many more tasks which could be like automated, and there were many softwares which we were using for automating those tasks. कि बहुत सारे चीज तो हम जैसे SAP यूज होता है अकाउंटिंग में फॉर अकाउंटिंग इन द लिस्टेड कंपनीज सो SAP में ही बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स बनाए हुए कि जैसे किसी को एंट्री करनी है लाइक इफ देयर इज अ इन्वेंटरी वैल्यूएशन व्हिच नीड्स टू बी डन सो आई हैव सेट ऑफ इन्वेंटरी दैट की एज ऑन डेट व्हाट इज द इन्वेंटरी उसका रिकॉर्ड पहले से ही है कॉस्ट तो पता ही है SAP में कॉस्ट है नाउ फॉर NRV बुकिंग ऑटोमेटिकली सिस्टम एक आप कोड रन करो एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच करेगा कि व्हाट इज द NRV ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोअर होगा तो उसको लेके इट विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक सो इन दिस वे दिस इज जस्ट अ एग्जांपल इसके अलावा भी जैसे व्हेन यू हैव टू फाइल GSTR रिटर्न्स सो दैट इज वेयर GST रिटर्न्स इन्वॉल्व्स लाइक 15 डिफरेंट स्टेप्स हमें ये करना है पहले आप डंप निकालोगे फिर ये एनालाइज करोगे फिल्टर आउट करोगे तो देयर आर 50-20 स्टेप्स out of that in that 15 steps you have to ensure कि like we have in every state there is IOCL office every state has to file GST return so आपको ensure करना है कि वो 15 steps हर एक state करे with accuracy and completeness there should not be any deviation in any of the states so this in here you can apply that RPA thing that we call robotics process automation कि आप वो process को automate कर दो एक बार पे आप मैनुअली भी कर रहे हो ऑटोमेशन के साथ भी कर रहे हो एंड व्हेन यू सी कि ओके ऑटोमेशन वाला प्रोसेस इज वर्किंग फाइन देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट टू ऑल द स्टेट्स सो व्हाट आई सॉ दैट कि व्हेन यू आर इन अ जॉब I could see there was more use of technology, there was more use of automation,
the more use of this RPA वाली thing and एनालिटिक्स एज वेल, क्योंकि अब वो डेटा एनालिसिस तो आप खुद भी कर सकते हो, इवन इन एक्सेल यू कैन डू कि आपने देखा कि लास्ट टाइम मैंने जीएसटी इतना पे किया था, इस बार इतना पे किया, तो व्हाई इट हैज चेंज्ड, माय सेल्स हैज डिक्रीज्ड, या मेरा इनपुट ज्यादा हो रहा है, मेरा परचेज बढ़ गया, सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू. सो आई सॉ दैट देयर वर मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑटोमेशन इन इनटू अ जॉब. And this is also a reason why I always say to all the CA fellows that you should learn about this, because आपको तो क्लाइंट को गाइड करना है ना, कि आपको बताना है कि आप ये चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्लाइंट को नहीं पता होगा, बट आप खुद सीख के रखोगे, देन यू कैन बेटर टेल द क्लाइंट कि चलो आपके में ये होता है, अब इसको ऑटोमेट करो. So that is why it becomes important for professionals as well to learn this thing. So I think this was the difference being in articleship and being in a job. This is true that सिर्फ CA स्टूडेंट्स को ही नहीं, सबको ही ऑटोमेशन लर्न करने की बहुत जरूरत है. Yeah. Okay. So next, life easier. So next question is, what is the impact on employment that now most of the accounting can be done through apps and softwares? Okay, impact on employment. So हाँ, मतलब अभी भी मतलब many people think that if everything gets automated, then मेरे job को क्या होगा? Like currently I am filing GST return in my company and I am being employed कि आपको GST return सारे फाइल करने. Now if I will automate this process, मैं मैनेजमेंट को बोल दूंगा कि देखो सर ये प्रोसेस, तो यहाँ पे एक बटन क्लिक करो, यहाँ पे सारी प्रोसेस हो जाएंगे. Then management will think कि फिर मैं why should I hire a CA for doing this thing? So that is there, but practically अगर हम 1990s की बात करें, तो that time what any finance professional used to do, they used to maintain their accounts in physical books, right? So they used to know कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे कौन सा चीज कैसे टैली होगा. But with the introduction of computers, everyone must have thought कि यार अब तो अगर सब कुछ कंप्यूटर में होगा एंड आपको टोटल वगैरह करना है तो एग्जैक्टली कंप्यूटर में लिख जाएगा, आपको कुछ भी बैलेंस कभी सस्पेंस वाली चीज नहीं रहेगी, बिकॉज एवरीथिंग विल बी मैचिंग. सो दैट टाइम अकाउंटेंट्स विल बी ऑफ नो यूज. बट वी कैन सी कि कंप्यूटर के आने के बाद अकाउंटेंट्स का डिमांड हैज फर्दर इंक्रीज्ड, because to maintain that, because even if you automate one process, but you need someone who will be maintaining that, you need someone who will be looking after that, and there will be new things which will be coming. Like we can say कि अभी जैसे GST में, just I'm giving more example of GST because I practically work in this. So like इसमें क्या है कि the compliance level has increased to such a great height. Like अभी आपको invoice wise देना भी है, आपको match the purchases. So this thing was never possible in 1990s or 2000, because that time we didn't have technology to do that. But now since we have the technology, the compliance part has further increased. Now that part needs to be done by a chartered accountant or someone. Now in this current scenario, now since we have computers, so now if we move to a one next level that हम इसको भी automate कर दे, then further new things will come, or which your knowledge of automation plus your finance knowledge both will be required. So that is why it's not that if you automate things then your job will be in danger. It's not that. There will be jobs and there will be more and more opportunities coming. So the faster you adopt it, the more opportunities there are for you. Like in current scenario, if someone hesitates to adopt learning computer, he will have zero job opportunities, right? So that's the same case, that having learning automation, it won't hamper job, it will hamper job for those who don't learn it. Okay, so let's hope कि जब तक मेरा CA clear हो मैं सब adopt कर लूँ. Yeah, that will be very beneficial for you as well. Okay, so next question is, how can a small or mid-sized firm adopt automation without having any knowledge of IT firm? Because उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता और इतना कि कंसल्टेंट हायर कर सके. Right. Yeah, right. So इसमें just like even I talk to some people working in Amazon in finance. So I asked them क्या आप लोग करते क्या हो? वहाँ तो वैसे भी वो तो टेक कंपनी है, तो वहाँ तो प्रोसेसेस ऑटोमेटेड ही होंगे. So then I came to know that they have finance people. उनका एक process, certain process they have. So that is being done by finance people. They encourage the finance people to make it standardized. कि आप इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज बना दो थ्रू फॉर्मूलाज या कुछ भी रूल्स लगा के आप इसको स्टैंडर्ड बना दो. देन दे गिव इट टू देयर IT टीम, who then automates the process. 2-3 महीने तक दोनों लोग साथ साथ में करेंगे. Once the finance guy has confidence कि हाँ वो IT वाला भी सही से कर रहा है, the process is good, so they hand over this process as an automated process and they will do some other task. Now the same thing as you said कि mid-size firm के पास तो इतना IT resource होता नहीं है या उनके पास knowledge भी नहीं है to automate all this task. So what I always suggest is that you can start from automating a small thing. जैसे कि आप just like
the use of आप directly Python में मत जाओ, आप directly coding में मत जाओ कि आप coding सीख रहे हो. You can just see कि what are your tasks which are being in repetitive in nature, कि आपको कुछ काम आप आर्टिकल को लगा के you same कि आप पे करो, तो वो बैठ के manually कर रहा है. So you see how this task can be done, one task. So you can start from one thing, one basic thing. It may be like data punching from a to 26S, data punching from form 16. So you can see कि चलो ये मेरा डेटा जो पीडीएफ फॉर्म में होता है, मैं एक आर्टिकल को बिठा के बोलता हूँ कि वो तू एक्सेल में डाल. तो ये पीडीएफ से एक्सेल में डालने वाला काम को तो ऑटोमेट कर सकता है ना. इट इज अ सिंपल कन्वर्जन फ्रॉम पीडीएफ टू एक्सेल. फॉर दिस मेनी टूल्स आर देयर. Python can be used or some other tools can also be used. So what I always suggest is see what tasks are there in your office which you are telling your articles to do on a day-to-day basis and उनको manually करना पड़ता है. So ये मतलब मैं एक लिस्ट नहीं बता पाऊंगा because I feel that there are a lot to be explored. Both sides चीजें we can do it. So you can start from your own firm wherever you are working or wherever the CA is कि आप क्या क्या काम अपने आर्टिकल्स को देते हो. You might say कि ना मैं एक आर्टिकल देता हूँ कि तुम ना एक साइट में जाके किसी का रिटर्न डाउनलोड करना है, GST डाउनलोड करना है, वो एक एक करके डाउनलोड कर रहा है. So this thing you can see कि how it can be automated. For there many add-ons are there, many Chrome extensions are there. So what I say is that it is all about engaging your willingness to learn. If you are willing to learn about automation, you can see that what many things are being done in your office, which tasks can be automated at the basic level first. So slowly by automating all these things, just like a very small example, if you have to send emails to your clients for some payment reminder or for some data reminders, so you can make a set and you can make a simple Python program. It's a very small Python program to send bulk emails. So all these things are there and there's a lot to be explored. Many things which I believe can be automated, and for that a lot of coding language is not required. And Python, why I stress so much on Python is because it's a very easy to learn. It's just like an English language. You can learn it even though the people who have zero knowledge of coding can learn it very well. So I think in that way, a mid-sized firm without having any resources, they can utilize the resource of their article. उनके आर्टिकल इतने होशियार है कि वो लोग खुद ही पाइथन सीख के वो खुद अपने प्रिंसिपल को बोलेंगे, देखो सर मैं आप में से ये काम करवा रहे हो, आप देखो मैंने ये छोटा सा कोड बनाया है, इसके थ्रू आप ये चीज कर सकते हो ऑटोमेट. सो दैट इज व्हाई आई एनकरेज सीए स्टूडेंट्स व्हाई इन देयर आर्टिकल एज वेल कि आप लोग खुद भी देखो कि क्या काम आप कर रहे हो एंड वो काम को आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो. This is just it will have a ripple effect. If you start learning, your friend will also start learning. कि भाई ये वो तो 2 मिनट में कर गया, मेरे को तो 2 घंटे लगते थे. Then he will start learning and he may come up with a different idea. सर इसको भी तो कर सकते हैं. So that is a process which for what no resources will required. Python and this all coding stuff, these are all free at a basic level. They are free. जब आप बहुत advanced करोगे, आपको Facebook जैसी कोई साइट बनानी, then you will have to take some खर्चा करना पड़ेगा. So these all are very free. It doesn't require any monetary resources and जो मतलब जो IT प्रोफेशनल तो नहीं चाहिए, आपके फाइनेंस प्रोफेशनल ही कर सकते हैं. The only thing required is willingness to learn. So I think it's very easy for a mid-sized firm, for someone even a small firm, to adopt automation. Okay, that's great. So is there anything that CA students can do to learn about automation and implement it practically? Yes, definitely. As I was saying, अब CA स्टूडेंट को सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि यह योर टारगेट इज टू बिकम अ CA, है ना. तो आप ये मत करना कि आप इतना ये पढ़ाई कर रहे हो कि आप अपने CA को भूल गए. So I don't encourage CPT और IPC students to go into it because उनकी पढ़ाई ही इतनी ज्यादा होती है एंड टाइम इतना कम होता है, तो वो शायद नहीं कर पाए. बट आई द मोस्ट द perfect time for a CA student to learn about it is the first year of articleship. First year of articleship में you get repetitive nature work. सबको वही काम मिलता है कि भाई ये ऐसे कर दो, मतलब अनलेस कि वो मैनुअल काम हो. भाई सबको फोटोकॉपी करना है तो फोटोकॉपी तो मैनुअली ही करना पड़ेगा. अनलेस कि वो मैनुअल काम हो, आपको कोई साइट से डाउनलोड करना है या कुछ काम ऐसा दिया जा रहा है कि आप ये दो फाइल्स को कंपेयर करो, दो डिफरेंसेस हाईलाइट करो. ऑल दिस थिंग व्हाट टास्क यू गेट, बिकॉज दैट टाइम योर स्टडी प्रेशर इज द लीस्ट. आपको ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी है, आपको ऑफिस में काम भी कम होगा क्योंकि आपको आइडिया ज्यादा होता नहीं. दैट टाइम यू कैन लर्न मोर अबाउट एक्सेल. आप पहले एक्सेल में काफी एडवांस एक्सेल तक आप यूज करो एंड देन व्हेन यू से कि एक्सेल से नहीं हो रहा है सम टास्क व्हिच एक्सेल कांट हैंडल, देन यू कैन कम इनटू लर्निंग अबाउट कोडिंग. एंड दैट इज वेयर आप अगर तब सीखोगे देन इन सेकंड ईयर आल्सो यू कैन कंटिन्यू दैट थिंग. यू कैन spend some time learning about it and this will be very beneficial when you go for a job.
जब आप जॉब के लिए जाओगे एंड व्हेन यू से दैट आई हैव दिस स्किल्स, आई हैव मेड दीज थिंग्स, दिस प्रोसेसेस मैंने ऑटोमेट किया है, सो दिस विल बी अ वेरी न्यू थिंग फॉर द इंटरव्यूअर ऑल्सो. अभी तो सबको नया ही लगेगा. आप किसी को भी बोलोगे कि आप सीए हो एंड आपने ये प्रोसेस ऑटोमेट किया है, तो डेफिनेटली एवरीवन विल लाइक इट. एंड हायर चांसेस कि आपने बिग फोर से हो सकता है आर्टिफिशियल नहीं की हो, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं हो या रैंक नहीं हो, बट स्टिल यू कैन लैंड अप इन अ गुड company because they will admire your skill. And अभी स्किल का ही जमाना है. No one cares about your grade because मेरे को कितना ही इनकम टैक्स का सेक्शन पता हो, आपको भी पता है, आप भी गूगल करके देख सकते हो, है ना. So that is not a thing which that is value addition to a company. Value addition is the skills you have. So this way I think CA students have to be very cautious of what is the borderline. आप अब कोई सीपीटी कोई आईपीसी का स्टूडेंट है, वो 5 महीने का पढ़ाई कि अब वो प्रोग्रामिंग सीख रहा है, तो दैट इज ऑफ नो यूज फॉर हिम. आप आईपीसी खत्म करो, देन यू हैव 2 months ऑफ गैप, दैट इज द बेस्ट टाइम. आप तब जब आईटी ट्रेनिंग ओपी ट्रेनिंग करते हो तब आप साथ में सीख लो. फर्स्ट ईयर ऑफ आर्टिकल्स भी द बेस्ट टाइम. सो कीप दैट, मतलब वो बॉर्डर लाइन पता होना चाहिए कि कहाँ तक जाना है. And as I always say, we want to become expert in finance and a working level knowledge in technology, not an expert in technology and working level knowledge of finance. So अपनी expertise को पहचानना है कि our expertise is in finance only, but we are also having a knowledge of technology due to which we can work efficiently. So that is a suggestion for all the students as well, that how can they learn about the automation. इट इज वेरी ट्रू कि आजकल मार्क्स से ज्यादा स्किल्स जरूरी है. लोग आपकी स्किल्स ही कंसिडर करते हैं. Correct. Okay, so next question is definition of audit includes professional skepticism, which means alert and questioning mind. It is a quality that is unique to only humans. So how can this be automated? Okay, I think that's a very good question, and that's a very genuine question as well. So, professional skepticism, that is definitely one of the core qualities of any auditor. And so here I need to question that how can this be automated? And it's very true that it cannot be automated. But before saying that, I will just say that professional skepticism can be of two types. Now, one can be you have seen that the company has purchased a lot of fixed assets, so then your professor skepticism will tell that the depreciation amount should have increased. And since it has purchased fixed assets, then definitely either the investments must be liquidated or cash balance must be liquidated, or the company might have taken a borrowing. If the company has taken a borrowing, then the interest expense must have must have increased. At the same time, you can also see what has happened to the interest coverage ratio and the debt equity ratio. So this is also a type of professional skepticism. You are aware of the transaction happening and you are aware to check each and everything. This is one kind of professional skepticism. Now, next kind may be that you were going inside the building of a client, you saw many posters in the reception that they have hired a new consultant to automate the processes. Maybe they have hired a new consultant, maybe they have hired BCG or McKinsey or Bain. They have hired a consultant, and the project have been doing well since 12 months. They have made a lot of progress, and the pamphlet was that we are moving ahead. You saw this pamphlet. Now, the professional skepticism might also include to see that whether the expenses of this consultation has been booked in this financials or not. This is also a kind of professional skepticism, right? So now, comparing both of these, the first one, which is a rule based. What when I say rule based, it is because you can make a rule that whenever fixed assets will increase, depreciation has to increase, and whenever any asset has increased, the other side of the asset, either cash or investments, must decrease, because it should be balanced. If it has not, the borrowings or some other liabilities must have increased, and if the borrowings have increased, you can make a rule that interest should also increase. So when it is a rule based, such things can definitely be automated, because this is a rule based. It is the if and or. If this, then that. So when there is a cause and effect thing, such things can be automated, and this is what even I want and I encourage to automate, because ये तो rule based है ना कि ऐसा होना चाहिए. Then definitely these things हमें अपना दिमाग इसमें हम क्यों लगाए? When we can make a program to think of this. But when it comes to the other type of professional skepticism, that you have to be aware of its surrounding, what's happening. Now you see that a company is incurring a lot, has made a new building just adjacent to this building. So your professional skepticism should say that where this building has been capitalized in the books, has depreciation been charged, it's not ready to use, so whether it should be it should have been claimed as a depreciation income tax or not. So all these things, these may not be automated in the very first level.
बिकॉज ये तो आपकी वो है ना कि जो बीइंग अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड ये आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस से ही आएगा. द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइट नॉट बी इन अ पोजिशन टू catch such errors or catch such things. So I think this is what we have to differentiate the type of professional skepticism we are talking about. If we talk about if the client has incurred a new type of transactions and we want to see that how this transaction should be automated, how this transaction should be recognized in the books, like कोई in days में क्या लिखा हुआ है, the transaction should be done at this cost. So ये सब जो एनालिसिस वाला पार्ट है दैट विल ऑलवेज स्टे विद ह्यूमंस. कोई लॉ का इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है दैट विल स्टे विद ह्यूमंस, बट द थिंग्स व्हिच आर रूल बेस्ड दैट थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड. So I think there is a bifurcation which needs to be done even in this case. ओके, ये क्वालिटी तो मशीन्स में तभी आ सकती है जब रावण मूवी चल रही हो या ऐसा कुछ. Right. Okay, so what are the disadvantages of automating all the accounting and auditing processes? Okay, disadvantages of automating all the accounting and auditing process. So I would say one disadvantage which even I feel I have faced it, कि जब आप प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देते हो ना, जैसे मैंने अगर ऑटोमेट कर दिया कि चलो ये आप ये दबाओ, आप ये 2 बटन्स क्लिक करो, देन जो अमाउंट आया उस अमाउंट की एंट्री पास कर दो, है ना. तो इसमें क्या होता है कि आप कभी ओवर रिलाई कर जाते हो सिस्टम्स में, एंड कभी कुछ अगर ऐसी ट्रांजैक्शन आई विच वाज अ बिट डिफरेंट देन द प्रीवियस वन, तो आप दिमाग नहीं लगाते हो कि ओके अमाउंट आ रहा है तो उतना क्या होगा. यू वॉन्ट डबल चेक. डेफिनेटली देयर आर स्कोर कि आप उसको चेक्स एंड बैलेंसेस लगा लो उसमें भी जो आप टैक्स लगाते हो, बट हाँ वो जब आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो एंड यू ओवर रिलाई ऑन द सिस्टम, दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ ऑटोमेटिंग एनी प्रोसेस. तो व्हाट आई रिकमेंड है आप ऑटोमेट करो प्रोसेसेस को, आप ऑटोमेट करो कोड से लेके, बट जो उसका बेसिस है, जो उसका जेनेसिस है, वो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि बैकएंड में ये कर क्या रहा है. इट शुड नॉट बी कि मैंने ये डाला एंड वहां से ये निकला. वो कैसे निकला अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को समझाओ, अपने एक्सेल में करके दिखाओ, देन यू शुड बी एबल टू डू. एंड दैट इज व्हाई यू शुड बी एबल टू हैव अ रिलेशन कि अगर इतना अमाउंट का, अगर 1 करोड़ समथिंग अमाउंट है तो इसके अराउंड में 30-40 लाख का ये एंट्री आता है. तो वो एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए फ्रॉम, मतलब इट्स नॉट बी कि यू आर जस्ट ओवर रिलाइंग, यू डोंट नो कि अंदर क्या हो रहा है. आपको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे ये अमाउंट डालो, ये अमाउंट आएगा. So if you over rely, that is one of the disadvantages I feel about automating any process. It is just like कि हम लोग कैलकुलेटर पे कितना ज्यादा डिपेंडेंट है. हाँ, even that can be said. कि अब 2+3 भी नहीं आता बिना कैलकुलेटर के. Right. Okay, so any comments on the recent failure of Infosys in handling the GST and income tax portal? Okay, failure of Infosys on income tax. Now, when we talk about project like a income tax portal revamp, so it's a very important project and it's a nationwide project which will impact like 7 lakh of taxpayers, also the practitioners. So since when we talk of such a big project, so what I feel is that जैसे हमें भी कोई अगर बड़े क्लाइंट का ऑडिट मिलता है किसी भी फॉर्म को, तो वो अपना एक बनाती है ना कि दीज आर द बेसिक चेक्स जो कि सही होने ही चाहिए, भले कितना ही काम हो. देयर मे बी मेनी फैक्टर्स ऑफ कि ना बहुत कम रिसोर्सेज मिले एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आर्टिकल्स नहीं थे, टाइम नहीं था, क्लाइंट को जल्दबाजी थी कि मेरे को इसी टाइम पे रिपोर्ट चाहिए. सो दिस थिंग्स मे बी देयर, बट एक कुछ बेसिक चेक्स होते हैं जो एनीवन विल कीप, लाइक कैश एंड बैंक को तुम वेरीफाई करेंगे भले कुछ और करे ना करे, हम उसके बोरोइंग्स को वेरीफाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को तो वेरीफाई करेंगे थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से. So these are some basic checks that should be done by each and every person. Now कुछ और हो सकता है, कुछ और हमने एनालिसिस करना था जिसपे क्लाइंट से डेटा चाहिए था, वो क्लाइंट ने डेटा देने में उतना कोऑपरेट नहीं किया तो हमने वो चेक नहीं कर पाए. So these things may be there. So similarly talking about this income tax side, इसमें क्या है, just like basic things like आपने जब अगर लॉग इन करते हो तो आपको ओटीपी आना चाहिए, तो ओटीपी आना चाहिए तो वो टाइम से आना ही चाहिए, नो मैटर कि आपको कम टाइम मिला, रिसोर्सेज है नहीं है. So these are some basic things you have to had seen. आपको नोटिफिकेशन, आपको कोई डिमांड आया तो नोटिफिकेशन मस्ट गो टू द टैक्स पेयर. सो दिस थिंग्स मस्ट हैव बीन चेक्ड. अगर ये सब चीजें जो ग्लिचेस है, फॉर दैट आई थिंक इन्फोसिस इज समवेयर रिस्पांसिबल, देयर इज नो वन एल्स वी कैन ब्लेम. बट वेयर वी टॉक अबाउट कि वो डेटाबेस रोल ओवर नहीं हुआ, पिछला साइट में था, दिखा रहा था मेरा रिफंड, बट इस वाले साइट में वो डेटा रोल ओवर नहीं हुआ, वो रिफंड नहीं दिखा रहा. तो हियर वी कैन से कि मे बी जो पिछला मेंटेनेंस जो करता था उसने डेटा सही से दिया नहीं दिया, all these things may be there. There are lot of things which go into when a problem comes. तो बहुत सारी चीज होती है, मे बी कि
गवर्नमेंट ने भी अपने डेडलाइन काफी स्ट्रिंजेंट रखा था कि मेरे को इसी टाइम तक चाहिए, मेरे को 7 जून को रिलीज करना तो 7 जून को ही करना है। एंड मे बी कि गवर्नमेंट ने बीच में स्कोप चेंज किया हो कि पहले उसने बोला कि मेरे को ये चीजें करनी है, बट उसने बाद में बोला कि नहीं मेरे को इसके साथ ये भी चाहिए, ये भी चीज डाल दो। So they we don't know like what went wrong, है ना। तो 2019 से ये वो लोग they were working on it, so we can't comment कि है ना who one is responsible to multiple factors, but हाँ the basic things which should have been in the site वो सब होनी चाहिए। एंड मेरे को जो पर्सनल ओपिनियन है मेरा, what I feel है कि मे बी जहाँ पे इनकम टैक्स से रिलेटेड है, जैसे कि आई हैव सीन मेनी, वो काफी पोस्ट आ रहे थे कि इतना मेरा इनकम बन रहा है, इतना मेरा टैक्स बन रहा है, बट रिफंड इज कमिंग, अ बिग अमाउंट इज कमिंग। सो देयर आई थिंक मे बी involvement of more finance people even in the building of a website, because finance people know the basics of taxation and ये सब का। तो वो basic I think more involvement of finance people would have also made a bit easier for them, but can't comment because we don't know what goes into making such a big site and what goes into doing all the data transfer now. So definitely there is a failure, but there are many people who can be involved. It's not only Infosys, I think it's a combination of many other things as well. Okay, so मैंने कहीं पर पढ़ा था that Infosys cannot make the portal work in even 5 attempts, and they want us to pass this C exam in 3 attempts. Okay. Right. So last question, any last advices you would like to give to the viewers who want to enter the field of accounting or auditing? Okay, I think one thing, like when we say CA, we should not say like it's the field of accounting and auditing only, because वो काफी restrict करता है कि it's not only that you do accounting and auditing. There are a lot of things which goes into it, and the best part which I feel about finance and and that is why I also encourage many जो लोग 10th में है 12th में, I encourage them to come to commerce, come to CA, is because आप कोई engineering ले लो, if you take a civil engineer, the scope of a civil engineer is if he gets a job in DLF, if he gets a job in some real estate, there he can do very well, because that's the main company where a civil engineer is required. If you talk about chemical engineer, then हो सकती companies like Asian Paints, Godrej, or even Indian Oil for example, so they are where chemical engineers are required. But when you talk of a finance, like a chemical engineer won't be required in a bank. Barclays will never hire a chemical engineer. Similarly, when you talk of finance, finance is something where even DLF will hire, Indian Oil will hire, Godrej will hire, even a bank will hire. And there are no any company where finance doesn't have a scope. And not only job, finance, everyone here wants to earn money, and वो तो है. And that is why when you talk of money, we talk of business, you talk of profit motive, and आप जैसे business की बात करते हो, even that the same thing comes कि law compliance, tax compliance कैसे maintain होगा, books and account. देखो तो आइडिया वाली चीज है, वो आइडिया तो कोई भी कोर्स आप नहीं दे सकते, नीदर इंजीनियरिंग नॉर सीए नॉर एमबी, नो वन कैन गिव यू द आइडिया कि क्या किसमें काम करना है, बट एटलीस्ट आइडिया इज वन थिंग विच यू हैव टू जनरेट ऑन योर ओन, एंड आइडिया है, उसके बाद आपको आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, that I think in that case, if I want to incorporate a company, it will take me 2 or 3 days to think over it and incorporate a company, because मुझे पता है कि ज्यादा कुछ नहीं है, एमओए बनाना, एओ बनाना, कुछ डीएससी वगैरह लगाना है, एजाइल प्रो 2-3 फॉर्म्स वगैरह है, वो सब भरो, कंपनी बन गई, कंपनी के बाद कंप्लायंस भी करना है, देन आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कंप्लाई कर लूंगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 3-4 फॉर्म्स है, सो दैट इज नॉट समथिंग विच आई फियर, है ना, कि टैक्स कंप्लायंस क्या होगा, टैक्स से डिमांड आ जाएगा, नहीं आएगा, आपको पता है क्या क्या चीजें होती है, हाउ टू मेंटेन बुक्स. सो आई थिंक दिस इज वन बेनिफिट विच आई ऑलवेज फील फॉर फाइनेंस की, है ना, एक तो ये जॉब में ज्यादा स्कोप है आपका, you can go into any company, and you don't want to do a job, you want to do a business, तो देखो आइडिया तो तुमको खुद को ही जनरेट करना है, whichever field you work. हाँ, आप ये हो सकते हैं कि राशिद भाई के ना आप फाइनेंस में हो तो आप अपने आइडिया पे जल्दी आप मुझे लगता है आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, अब उसको मार्केटिंग कैसे करना है, वो सब कैसे करना है, तो वो तो आपके विजिबिलिटी में ही डिपेंड करता है, दैट हाउ बेटर यू कैन थिंक. तो इस इज व्हाई आई विल रिकमेंड ऑल द जो भी मतलब देख रहे हैं एंड दे सी फाइनेंस एज ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग फील्ड, तो वो नहीं देख के यू कैन सी फाइनेंस की समथिंग विच हैज अ ब्रॉडर स्कोप. It manages the finances, it manages how well you can grow your company, and so उस aspect से you should view a chartered accountant or any finance professional. Okay, so now let's move to one rapid fire round. I will be asking 2 types of questions. So in first type of question, you have to answer the first thing that comes to your mind.
So Okay. first question is, what career would you have taken up if you have not become a CEO? I think IT field. Okay, so favorite place for holidays? It's a beach, something where there are beaches, like maybe Andaman Nicobar types. Okay, who is your favorite YouTuber? Favorite YouTuber now, since I watch a lot of this Python things only. There are Lina Gharani is one who makes videos on Excel, and I really like her videos. So that is one YouTuber. And apart from that, I think Technical Guruji is one I really like, because whenever I have to see for any gadgets, that is where I go to. Okay, so what will you do if you get one day where you can do anything and COVID won't affect Anything and you? COVID will not affect you. You will not get COVID. I think I like to travel a lot, so I will want to go to a place and have to enjoy with the friends and all that. So I will want to travel somewhere. I think सब लोग यही बोलेंगे कि हमें बाहर जाना है. No, even had there been not COVID, also I really like to go places. So that is what. Okay, if you can have superpowers, which one would you like to have? Reading the mind of others. That is really what I prefer. Okay, what will you do if you get to be the Prime Minister of India for one day? Nayak wala scene. For one day, I really feel that very less for one day. But one thing I would see is there's so many things. Once I will. Once I would see the whatever benefits the central government has said कि ये विकास योजना ये योजना वो योजना. So that I would see कि what are the list of yojanas there, and if I could make everyone aware of those yojanas through some webinar or something कि भाई ये योजना है, there you can get some benefit and this is how you should go around it. I think that is one thing. One एक दिन में तो उतना ही हो पाएगा. So that I think I'll do कि whatever योजना are there, I will make everyone aware. नहीं बट सर ये तो थोड़ा ऐसा हो गया कि चलो अच्छी वाली चीज मजेदार वाली चीज क्या करना चाहोगे आप? प्राइम मिनिस्टर बन के अब मजेदार वाले क्या कर सकते हैं? आई डोंट नो कि मजेदार वाली चीज क्या कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बन के. मैं तो उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर कर दूंगी. ओह, अच्छा, ये तो चीज भी कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर. आई डोंट थिंक सो ही हैज पावर टू डिक्लेयर हॉलीडे ऑन एनी डे. हाँ मतलब ठीक है, मेरे को तो अभी तो अच्छी वाली चीज ही सारी ध्यान में आ रही है. Can't think of any such. Okay, describe yourself in one word. मोटिवेटेड. मैं तो खुद को हमेशा ये मानता हूँ मैं मोटिवेटेड. ये मैंने देखा है. Okay, how do you imagine your future to be? My future, I imagine as someone who has created some impact in some other people's life, who has made some value addition. कि मेरे वजह से किसी और को लगा कि हाँ भाई चलो कुछ नया सीखने को मिला या कुछ उसकी लाइफ थोड़ी बेटर होगी ड्यू टू मी. And I really see myself कि it's not that I don't want to work and मेरे को एकदम आराम करना है, but I want to work where it is creating some impact. I don't like doing something कि मैं ऐसे होता ना कि I don't like wasting time doing anything which is not value addition for others or for me. So future में मैं यही देखता हूँ कि I am involved in any work which is adding value either in my life and more towards is adding value in other people's life. You are like a pure topper. हाँ बोल सकते हैं वो टॉपर है तो टॉपर वाली चीजें आएंगी, उसके अलावा तो क्या कर सकते हैं, बाई नेचर ही ऐसे है. Okay, so second type of questions, I will give you two options. You have to select one. So Okay. first is LinkedIn or Naukri.com. LinkedIn. Okay, this one is my favorite. Praveen Sharma sir or Parveen Jindal sir? I have studied only Praveen Sharma sir, so other one I can't comment. To Praveen Sharma sir, I would say. Same situation. Okay, beach or mountains? What beach or mountains? Beach. Books or movies? Books. Instagram or Facebook? मैं दोनों नहीं, बट हाँ इंस्टाग्राम मैं ज्यादा एक्टिव उसी में हूँ. Sunset or sunrise? Sunrise. I'm a morning person. I like sunrise. Introvert or extrovert? Extrovert. Job or business? Business. पाव भाजी और छोले भटूरे? छोले भटूरे. दिल्ली. मुझे तो पाव भाजी पसंद है. Okay, Hindi or English? Hindi. Okay.
So, any last life advices you would like to give? Life advices I would give. मैं usually यही बोलता हूँ कि whenever you are doing anything, so always love what you do. It was said by Steve Jobs and I really like this. मैंने पहली बार 12th क्लास में पढ़ा था, उसके बाद से मेरे को काफी अच्छा लगता है that the only way to do something great is to love what you do. आप जो भी कर रहे हो, आप जो आपको अच्छा लगता है वही करिए, एंड आप जो कर रहे हो आप उसको पूरे शिद्दत से करिए. बी committed towards whatever you're doing, because that is the only way you can do something great. Now if you are half-hearted, you're half-minded towards what you're doing, then you will never achieve good results. So यही advice होगी that हमेशा don't take life very seriously, है ना, कि एकदम कुछ करना है या ये don't take very seriously. ऑलवेज एंजॉय एवरी मोमेंट वट एवर यू आर डूइंग. लाइक मेरे केस में लोग बोलते हैं यार तू हमेशा यही पढ़ाई करता रहेगा, ये करता रहेगा, तो उनको लगता है कि आई एम वेरी सीरियस टुवर्ड्स लाइफ. बट इन माई केस द रियल फैक्ट इज दैट आई रियली लव डूइंग इट, है ना. तो मैं जो भी करता हूँ आई रियली लाइक इट. आई डोंट डू इट आउट ऑफ प्रेशर. वो लगती है कि वो चीजें ऐसी करती हूँ जो बाकी लोग काफी प्रेशर देके करते हैं, मेरे को तो काफी वो होता है, नेचुरली आ जाता है. इफ समवन सेज कि ओके आपको सिट एंड स्टडी या कुछ भी, मतलब सीए था तब मेरे को सीए में पता नहीं कोर्स ही इतना अच्छा लगता था, आई यूज्ड टू स्टैंड स्टडी. सो आई यूज्ड टू लव दैट. फॉर अदर पीपल दे यूज्ड टू थिंक आई एम वेरी सीरियस टुवर्ड्स दैट एंड मेरे को एंजॉय नहीं करना. एंड व्हेन आई एंजॉय और व्हेन एग्जाम्स गेट ओवर देन आई एंजॉय अ लॉट एज वेल. So that is why I always say कि always do what you want. But ये होता नहीं, do what you want में लोग इंटरप्रेट एग्जैक्टली, तो मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, हम अपना दिन भर नेटफ्लिक्स करेंगे. always have a target, have a goal in your life that what you want to do, है ना. वो वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए. आप अगर आज हो तो आप खुद को 10 साल के बाद कहाँ देखते हो, what is your aim. वो एम के साथ always have that thing and rest always take, don't, no need to take life very seriously, है ना. जो भी आप कर रहे हो मजे में करो. That would be the advice. That my brother has told me that you used to always study, no holidays, no nothing. हाँ, तो that I used to love ना. Someone might love watching Avenger or watching some TV, but someone might love watching some video on audit का video. So that is the same thing. Okay, so thank you so much for this talk show. And now I would like Shubham to give a thank you note. Thank you, Nushka. With so much information and insights, we now come to an end of today's episode. We would like to thank our guest for today, Mr. Pranav sir, for this insightful and delightful session and for giving us your precious time. It was an amazing and knowledgeable and enlightening session for all of us. I hope that you all would have enjoyed this session as much as we did. Now, I would once again like to thank you, sir, for being with us today. Stay tuned for the next episode of Melody Demystified. Till then, take care, stay home, and stay safe.